Namaskar. Respected Mr. Martin Nedigar, CEO, Switzerland Tourism. You know, one of the pioneer activity tourism in all over the world, one of the best tourism activity they are organizing in Switzerland. I welcome to India. Madam Rajni ji, Chairman, Managing Director, IRCTC, is there? Is she coming? Respected Ajay Singh ji, Chairman, Managing Director, SpiceJet. Team of the Hindustan Times and the management, staff, those who are lot of efforts put for this conclave. It is my pleasure to, amongst all of you, in this one of the important conclave organized by Hindustan Times. The theme of the conclave is rethinking tourism for future, sustainability, transition and greener tourism system at grassroots and global level. हमारे लिए not only India, ये दुनिया के लिए भी, not only tourism, in all sector, ये thought आना चाहिए मन में. ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए, देश के लिए और आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा. I would like to start with a shloka from the Bhagavad Gita that beautifully explains the idea of environment and the sustainability. Kham vayumagnim salilam mahincha jyotishim sattvani disho drumadin sari samudranisha hare shariram yat kincha bhutam pranamedanani. This means, Mr. Martin ji, this is a shloka from our Gita, Bhagavad Gita. Just now I read. This means, ether, air, fire, water, earth, planets, all creatures, directions, trees and plants, rivers and seas, they are all organs of God's body. This is the theme of the Bhagavad Gita in one para. Remembering this, a devotee respects all species. We belong to a civilization where sustainability and environment protection and integral whatever ethos from Lord Ganapati to Mahatma Gandhi, India has approached sustainability living. Friends, in fact it was Gandhiji who said the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. This is Mahatma Gandhiji told. Friends,
government of India, we are going to bring a new national tourism policy. There is no comprehensive tourism policy in India because tourism is one of the sector that can grow in India compared to Switzerland. That's why our government, Indian government, we are bringing a new tourism policy. In the policy we make sustainability integral to our tourism mandate. The National Green Tourism Mission going to be one of the most important missions of our national tourism policy. We will also make our grassroots stakeholders aware of the challenges and enable to them to think about the solutions. हम नया टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाले हैं. इतना बड़ा देश है, इतना मॉन्यूमेंट्स है, इतनी हेरिटेज साइट्स है. स्विट्जरलैंड देखने को जाते हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं. आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, उससे अच्छा नेचुरल सीन्स भारत में है. कोई स्विट्जरलैंड जाने का जरूरत नहीं, भारत ही स्विट्जरलैंड से अच्छा है. मगर अपना पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, मैं बताना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट का मैं मिनिस्टर भी हूं. लगभग 40-50 साल से इंसर्जेंसी ग्रुप्स के कारण नॉर्थ ईस्ट में कोई ना रोड था, ना रास्ता था. 15-15 दिन, 20-20 दिन मनमाने ब्लॉकेड होता था, धरना होता था, स्ट्राइक होते थे, कर्फ्यू होते थे. कोई रोड नहीं बने, खाली पेपर के ऊपर रोड बनते थे. कॉन्ट्रैक्टर में पॉलिटिशियन रोड घर में बना लेते, दीवार पे उधर नहीं बनते थे. बिल्कुल बनता था पेपर के ऊपर रोड, पैसे खर्च होता था. मगर अब मैं खुशी से बताना चाहता हूं, अब एक भी ना धरना होगा, ना ब्लॉकेड होगा, ना कर्फ्यू होगा, ना रास्ता रोका होगा. आप देख लीजिए, इतने अच्छे नेशनल हाईवेज. नाउ वी आर स्पेंडिंग दिस टाइम 80,000 crores of the national highways works going on in North East. Next year we are going to spend 50,000 crores for more national highways in North East. Because flight and helicopter we cannot dependable because of weather in North East. We should depend only train and roads. We are also working for the connectivity of train connectivity, rail connectivity. In this time, I can say proudly, लगभग 90 tunnel works for ट्रेन ट्रैक्स का अभी काम चल रहा है. इसलिए आपको आने वाले 2024 तक नॉर्थ ईस्ट पूरा कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी. अभी तक 70% पूरा ठीक तरीके से कनेक्टिविटी हुआ है. अभी मैं चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट आए, हम भी स्विट्जरलैंड से ज्यादा नॉर्थ ईस्ट को अच्छा बनाए. इसलिए मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, नॉर्थ ईस्ट में आप लोग आइए. पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एज वेल एज अभी आपको पहले कभी भी नहीं थे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के बीच में एक कंपटीशन, हेल्थी कंपटीशन है विकास के बारे में, डेवलपमेंटल बारे में. हमारा असम का चीफ मिनिस्टर चाहते हैं मैं मेघालय से अच्छा रहना चाहिए विकास में. हमारा मेघालय चीफ मिनिस्टर चाहते हैं जो भी पार्टी अलग होगा, आइडियोलॉजी अलग होगा, मगर हम 8 स्टेट्स को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं.
हमारा मेघालय का चीफ मिनिस्टर चाहते हैं अरुणाचल से अच्छा ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास है। ऐसा एक अच्छी वातावरण पहली बार, क्योंकि पहला तो ऐसा डेवलपमेंट के बारे में ना सोचते भी नहीं। अभी डेवलपमेंट के बारे में यंग चीफ मिनिस्टर्स आए, एवरीबॉडी टेकिंग विथ पॉजिटिव थिंकिंग। दैट्स व्हाई फ्यूचर में अच्छे टूरिज्म के बारे में भारत में मैं एक उदाहरण एक नॉर्थ ईस्ट का दिया। अभी मेरे पास ASA का 3600 मार्मेंट्स, मैं इस सब का मार्मेंट्स का पूरा डिजिटलाइजेशन कर रहा हूं। आप घर में बैठ के कौन सा मार्मेंट में किधर है, कितना दूर है, क्या देखना चाहते हैं, मैं आप सभी मार्मेंट्स को आप लोगों को देना चाहता हूं। भी कोई आए, कोई मार्मेंट में एडाप्ट करता हूं, मैं विकास करता हूं, मैं सर्विस करता हूं, मार्मेंट पूरा आपको मैं दे देंगे। मैं ताजमहल को देने को तैयार हूं अगर विकास करना है। अजंता एल्लोरा ने देने को, अभी रेड फोर्ट दिया, मैं दालमिया का कंपनी को रेड फोर्ट दिया, वो भी ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा जो ये विदाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, विदाउट पीपुल्स पार्टिसिपेशन, विदाउट पीपुल्स सपोर्ट, इतना बड़ा देश में हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ गवर्नमेंट कैन नॉट डू ऑल, पीपुल्स इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। फ्रेंड्स, वी नो, जस्ट नो मैडम आल्सो टोल्ड, कोविड-19 दुनिया में सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर सेक्टर बिकॉज ऑफ कोविड-19, lot of impact on tourism. Still, in world, in global, in India, अभी हम कोविड-19 से बाहर नहीं है। अभी FTA, foreign tourist arrivals, still not yet started in India. Some people are coming, that is different. Aggressively, these are foreign tourists, still not yet started. But one thing I can say, first time after Indian independence, domestic tourism is a lot of activity, growth we can see. In Jammu Kashmir, even this time also, ये समय पे आप देख लीजिए, श्रीनगर एयरपोर्ट में लगभग 30-40 चार्टर्ड फ्लाइट्स चलते हैं। फ्लाइट्स चलने का जगह भी नहीं। जो श्रीनगर में ताज होटल है, लगभग एक रूम 1 लाख रुपए से ज्यादा अभी आज सेल्स हो रहे। कभी कुछ लोग आपके जैसे लोग मुझे फोन करते हैं, टूरिज्म मिनिस्टर तो ताज वाला सुनते बोलते सब मेरे को परिवार के साथ जा रहा हूँ, रूम नहीं मिल रहा, कुछ बोलो। ये स्थिति है, बहुत बुरी अच्छा थी। मैं अभी केदारनाथ टेम्पल को जाने के लिए हम रोकना पड़ा, लोगों को रोकना पड़ा, बिल्कुल पुलिस को लगा के रोकना पड़ा। इतना भीड़ आए थे लोग देश भर। ऐसा एक डोमेस्टिक टूरिज्म में एक बिकॉज ऑफ कोविड के कारण हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण अभी थोड़ा ओपन हो गया, इसलिए ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। इसीलिए डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत बड़ा स्कोप है। अभी मेरे घर में जो हमारे जो छोटे छोटे यंग स्टूडेंट्स रहते हैं, आपके घर में भी होगा, उनको सिंगापुर में क्या है, स्विट्जरलैंड में क्या है बता देते हैं, मगर भारत में मध्य प्रदेश में क्या है, असम में क्या है, हमारे बच्चे बोल नहीं सकते। इसीलिए मैं अभी तय किया हूं, यंग टूरिज्म क्लब्स इन ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग हाई स्कूल टू यूनिवर्सिटी, सब बच्चों को आजू बाजू टूरिज्म सेक्टर में स्टूडेंट्स को ले जाना है। उसके बाद उनका पेंटिंग कॉम्पिटिशन करना। कितना समय दिया आपको मेरे मैडम? 5 मिनट्स। और बच्चों को कंपटीशन कराता हूं, क्योंकि जब तक बच्चों को आप टूरिज्म दृष्टिकोण से अवेयरनेस लाएंगे, भारत का टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। कारण किधर जाना है हॉलिडेज में, कौन सा टूरिज्म जाना है,
आप लोग नहीं तय करते, आपके बच्चे लोग तय करते, आपका बेटी बेटा वो लोग तय करते हैं किधर जाना चाहिए। वो सेक्टर को हम टारगेट नहीं किए तो भारत में डोमेस्टिक टूरिज्म नहीं बढ़ता। आज लड़के सिंगापुर जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, माता जी के ऊपर पिताजी के ऊपर इंप्रेस करके वो लोग टूर तय करते हैं। भारत में भी किधर जाना है बच्चे तय करते हैं, आप लोग बात नहीं सुनते। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेटिंग स्टूडेंट्स कम्युनिटी, यंग कम्युनिटी। इसलिए हम सभी स्कूल्स में, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स का एक क्लब्स बना रहे हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उनको ले जाते हैं बाहरों। अभी ठीक तरीके से वो क्लब का एस्टैब्लिशमेंट करने का काम शुरू हो गया। और आपको ours is a largest COVID-19 vaccination program we did in India. 225 crores of vaccination we distributed freely in India. This ours is the largest vaccination activity in the entire world. Ours is one of the best vaccination. We can say proudly, one of the best vaccination we produced in India. Because of vaccination, you can see nobody is wearing the mask. That is the impact. You can see anywhere. No single person are wearing mask. No single person are wearing mask. That is the success of India. We are largest population. We have problems also. We also have unemployment problem also. Still we are coming with the economical growth and vaccination, COVID-19. We defeated COVID-19. We are going to defeat totally from India COVID-19. That's why I'm all over the world. I'm saying, come to India. There is a lot of anti-publicity from against the India about the COVID-19. Friends, अभी COVID-19 has changed consumer preferences for wellness and nature-centric travel. This had raised to importance of holistic and sustainable business models. Therefore, tourism initiatives that have sustainability and green tourism elements embedded to our business will regenerate positively with the tourists. I believe that sustainability is a key drive of conscience and responsible hospitality. When we talk about the sustainable tourism, the following are things we must keep in mind and following the first. People and planet first. People and planet first. Decarbonization of restrictions. Empowering entrepreneurs. Friends, in fact, of our village have already received global recognition in number of tourism villages in India. Now we are planning to set up a resource centers which will further guide our villagers to learn new and best global practices. I am happy to share that green tourism to promote sustainable, responsible and inclusive growth of the tourism sector will be one of the key priorities on during the G20 presidency. After independence, I can say one of the biggest events we are going to organize in India, that is G20 countries. Around about 280 conferences within 1 year. 280 conferences we are going to organize. That is a finance ministers meeting, finance secretaries meeting, tourism ministers meeting, tourism secretaries meeting, all the G20 countries prime ministers meeting, G20 countries secretaries meeting, everything. 280 meetings
tentatively we are going to finalize. Through G20 countries, we can brand our country's image. We can brand our tourism sector. So, everything we are planning. Entire government of India is working about the preparation of the G20 countries. That's why we should also, मैं सभी प्राइवेट सेक्टर से भी अनुरोध करना चाहता हूँ G20 कंट्रीज के लिए आप लोग एक पूरा सहयोग कीजिए. टूरिज्म में जितने आपका होटल में कोई आएंगे, कौन सा होटल आना चाहिए हम तय करें. जो शॉपिंग किधर जाना है तय करेंगे, कौन सा डेस्टिनेशन जाना है तय करने वाले हैं. उधर पूरे आप लोगों को भी सहयोग होना चाहिए. We are ensuring that the real standard of green tourism is being followed in the implementation for sustainable tourism criteria in India guidelines. This step taken towards seeing tangible positive impacts, friends, and truly believe that our hospitality and the tourism sector, that we have power to potential to enable to vision of our government of activating India 2.0 fueled by the spirit of Atmanirbhar Bharat. We believe that sustainability and green tourism and further provides impetus to Chalo India, Come India. This is for India, one of the biggest ambassador for tourism, my Prime Minister. My Prime Minister goes to anywhere in the world. He asks my Indian community, Indian origin, those who are staying in abroad, he requests him to bring 5 foreigners from their country to India to see what is India, what is our culture, what is our heritage, what is our because that's why I am saying for Indian tourism, my Prime Minister is one of the biggest brand ambassadors. I would like to thank the organizing team. I don't want to take much time. Hindustan Times is one of the disciplined and dedication organization. They are working last so many years. That's why I should follow their instructions. That's why I would like to thank the organizing team of Hindustan Times once again for inviting me and allowing to me share my thoughts and information about the Government of India decisions. Thank you everybody. Once again I welcoming the foreign delegates, those who are in this event. Not only this conference, I am requesting to send Switzerland community to India. That is my request. Thank you. Thank you very much. Thank you so much for that very insightful and